Hi, good morning, friends. Can you please confirm you are able to see me, hear me, and see my video as well? So, I'd like to welcome all of you to this interactive session, which we are trying to conduct every week. ये सेशन का नाम है मार्केट एनालिसिस एंड इनसाइट्स टेक्निकल पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ मैं आपको। ये अपस्टॉक्स के प्लेटफॉर्म पे करेंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर हफ्ते इसको एक रेगुलर फीचर बनाएं, जिसमें हम अपने दर्शकों के लिए, हमारे ट्रेडर फ्रेंड्स के लिए टेक्निकल पर्सपेक्टिव कैसे होता है मार्केट का, ब्रॉड मार्केट का किस तरह एक टेक्निकल एनालिसिस करना चाहिए, वो देखेंगे। एंड किस तरह के ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज वहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं, चाहे वो कैश में हो, फ्यूचर्स में हो, या तो ऑप्शंस में हो। किस तरह की स्ट्रेटजीज हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं गिवन अ पर्टिकुलर व्यू पॉइंट। लोग चालू करने से पहले कुछ डिस्क्लेमर्स हैं जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, ताकि आप लोग उस पर क्लैरिटी रखें कि हाँ, यहाँ पर कोई भी प्रकार का स्टॉक ट्रेडिंग टिप या कोई रिकमेंडेशन उस तरह सा कुछ भी नहीं दिया जाएगा। एक जनरल ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस के टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, समझेंगे कि कहाँ पर सपोर्ट्स हैं, कहाँ पे रेजिस्टेंसेस हैं, क्या ट्रेंड है बता रहा है, और किस तरह का एक मार्केट का पर्सपेक्टिव है। एंड एक एनालिस्ट के तौर पे, एक टेक्निकल एनालिस्ट के तौर पे हमारा उसमें क्या इंसाइट हो सकता है, और उसके बेसिस पे हम अपने पोर्टफोलियो को, लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, उनको किस तरह से हम लोग उस पर कोई एक्शनेबल इंसाइट्स मिल सकती है क्या। सो एक ब्रॉड मार्केट एनालिसिस एक एनालिस्ट के तौर पे किस तरह से करना चाहिए, उसके बारे में हम लोग बात करने के लिए हर हफ्ते आने की कोशिश करेंगे। द सेशन इज गोइंग टू बी इन इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में मिक्स करके बोलूंगा। प्रिडोमिनेटली मैं ट्राई करूंगा कि हिंदी बात करूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग समझ में आवे। और अगर कुछ दर्शकों को अगर नहीं समझ में आता है या कुछ उनको तकलीफ होती है, तो प्लीज मुझे बोले, चैट बॉक्स में अपना कमेंट डालें, ताकि मैं उसको इंग्लिश में भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, लेट मी स्टार्ट द प्रेजेंटेशन देन। Right, friends. The title of the topic that we are going to be discussing of the session is live market analysis and insights, a technical perspective दे रहा हूँ। और मेरा नाम अमित गोयल है। आई एम CMT, चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन एंड ए सभी रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट। आज की तारीख है 10 सितंबर 2025 एंड ये अपस्टॉक्स के प्लेटफॉर्म पे हम लोग सेशंस कर रहे हैं ऑन द यूट्यूब चैनल। बिफोर वी स्टार्ट, कुछ डिस्क्लेमर्स हैं। ये मेरा सभी रजिस्ट्रेशन नंबर और ये मेरा BSc एनलिस्टमेंट नंबर है। आप चाहे तो इनको वेरीफाई कर सकते हैं रेस्पेक्टिव साइट्स पे जाकर। इसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर्स एंड वार्निंग्स हैं। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। Registration granted by SEBI and certification from ISM in no way guarantees performances of the analyst or provide any assurance of returns to investors. इसके अलावा भी कुछ और डिस्क्लेमर्स हैं जो स्टैंडर्ड SEBI मैंडेटेड डिस्क्लेमर्स हैं, जो यहाँ पर आप लोगों के लिए रखा हूँ। आई वेट फॉर अ कपल ऑफ सेकेंड्स, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप बाद में आराम से पढ़ सकें एंड समझ सकें कि क्या आपके राइट्स हैं, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। कोई भी सेशन जहाँ पर एक एनालिस्ट जो रजिस्टर्ड एनालिस्ट है वो अगर ले रहा हो। जो भी मैं स्टॉक्स डिस्कस करूंगा, रादर मैं इंडाइसेस डिस्कस करूंगा मेनली। उसमें मेरा कोई भी ओपन पोजीशन नहीं होगा, मैंने किसी को रिकमेंड नहीं किया होगा। इस तरह के कुछ डिस्क्लेमर्स एंड डिस्क्लोजर्स दिए जा रहे हैं यहाँ पर। और कोई भी अगर स्पेसिफिक कंपनी की अगर आपकी रिक्वायरमेंट आती है, आप पूछना चाहते हैं कि सर इसका टेक्निकल सेटअप किस तरह से लग रहा है, तो उसके बारे में भी मैं एक बार चेक कर लूंगा। अगर मेरा कोई भी होल्डिंग या मेरा कोई डायरेक्ट एक्सपोजर होगा, तो मैं पहले उसका डिस्क्लेमर दे दूंगा, उसके बाद ही उसके बारे में हम लोग टेक्निकली देखेंगे। राइट, इसके अलावा भी कई सारे लिंक्स हैं जो सभी मैंडेट हैं। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, डिस्क्लोजर्स, इन्वेस्टर चार्टर, एस्केलेशन मैट्रिक्स, ग्रीवियंस, रिफंड तो यहाँ पे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, तो रिफंड का कोई बात ही नहीं है। टर्म्स एंड कंडीशंस, मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स। यहाँ पे कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है। दिस इज मोर टू डिसेमिनेट जनरल मार्केट एडवाइस। जैसे मैं एडिटिंग प्रॉफिट पे आता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कल आने वाला हूँ एडिटिंग प्रॉफिट पे, तो वहाँ पर मैं अपने मार्केट इनसाइट्स देता हूँ। सपोजली जैसे कोई भी एक मार्केट वेटरन, कोई भी जिसका एक्सपीरियंस है मार्केट में, वो आके अपनी भाषा में अपनी इनसाइट्स को शेयर करता है कि मार्केट उसमें क्या लग रहा है,
उसी हिसाब से मैं यहाँ पर भी आया हूँ ऑन अपस्टॉक्स प्लेटफॉर्म। तो अगेन बिफोर वी स्टार्ट, there will be no recommendation of any trades. We will do a general market analysis and understand what kind of trading strategies can be deployed given a particular perspective. Now, जैसे कुछ लोग पूछ रहे हैं, स्टॉक्स ऑलरेडी डाल चुके हैं कि भाई ये स्टॉक्स बताइए। मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम लोग जनरल मार्केट एनालिसिस करेंगे। स्टॉक्स के बारे में मैं लास्ट के 10-15 मिनट्स में एक कर्सरी ग्लांस डाल के बता दूंगा कि मेरे को क्या लग रहा है फ्रॉम अ टेक्निकल स्टैंड पॉइंट। ठीक है। नाउ कमिंग टू, आई होप एवरीबॉडी इज एबल टू सी द स्क्रीन। यस, नो? आप सबको ट्रेडिंग व्यू दिख रहा है? राइट, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। और भी कोई इंडाइसेस अगर आपको इंटरेस्ट हो तो बताइएगा बिफोर वी मूव टू सम स्टॉक्स। नाउ निफ्टी और बैंक निफ्टी में, अगर आप निफ्टी का अगर आप चार्ट देखें तो निफ्टी ने क्या किया था? निफ्टी ने यहाँ पर एक आपको लेट मी जस्ट पुल अप द पेन, एनोटेट करने के लिए आसानी हो जाएगी मेरे को। निफ्टी हैज टेकन सपोर्ट एट दिस ऑगस्ट लेवल। ओके, यहाँ पे क्या बनाया है निफ्टी ने? इक्वल लो। तो यहाँ पर एक सपोर्ट बन जाता है अपना, टेक्निकली इसको बोलते हैं सपोर्ट बनाया है। राइट, अब मार्केट ने क्या किया है? यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। ओके, दिस इज R1 R2। राइट, अब मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, ये वाले रेजिस्टेंस को जो यहाँ पर हम लोगों ने टच किया था, जस्ट शो इट टू यू किस तरह से ये दिखता है। मैं क्या देख रहा हूँ, देखिए मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन और वॉल्यूम्स को हाइड कर देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि क्या देख रहे हैं। ठीक है, तो नाउ, हाँ, ये डेली चार्ट है जिसको जी। कभी भी कोई भी ट्रेंड अगर हमको आइडेंटिफाई करना है कोई भी अंडरलाइन का, तो प्रिफर करेंगे आप एज अ टेक्निकल एनालिस्ट कि डेली चार्ट पे क्या हो रहा है वो देखिए, क्योंकि उस दिन का पूरा विवरण उस डेली चार्ट के कैंडल में मिलता है। ठीक है, वो कैंडल नॉट ओनली कैप्चर्स द इंट्राडे मूवमेंट, इट आल्सो कैप्चर्स प्रीवियस डे पे जो भी न्यूज आया था उसका ऑब्जॉर्प्शन मार्केट ने किस तरह से किया, पॉजिटिव था, नेगेटिव था, वगैरह वगैरह। ठीक है, एंड उसके बाद मार्केट का फॉलो थ्रू कैसा था। ठीक है, तो ये ओपनिंग, प्री ओपन, ओपन, इंट्राडे मूवमेंट एंड क्लोजिंग सारा का सारा कैप्चर करता है। ऑन द डेली चार्ट आपको वो न्यूज का पूरा एंड दिन का पूरा अब्सॉर्प्शन मिलता है, उसकी पूरी स्टोरी मिलती है। इंट्राडे चार्ट्स वगैरह में देखेंगे तो आपको क्लैरिटी नहीं रहेगी, क्योंकि इंट्राडे में काफी सारा नॉइज होता है। डेली चार्ट या वीकली चार्ट नॉइज कम होता है, आपको क्लैरिटी मिलती है कि ट्रेंड्स क्या हैं, और उसके बेसिस पे आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको ठीक ठाक असेसमेंट हो जाता है कि मार्केट किस तरह से जाना चाहता है। ठीक है, अगर आप डेली चार्ट देखें तो यहाँ पर एक सप्लाई जोन या एक रेजिस्टेंस पॉइंट बना था, जो मार्केट ने कोशिश किया यहाँ पर, और ये टेक्निकली अगर स्पीकिंग तो ये एक बेरिश एंगल बनाया था। ठीक है ना? तो क्योंकि मैं टेक्निकल एनालिस्ट हूँ तो मैं प्राइस चार्ट को जब भी रीड करूंगा, प्राइस एंड वॉल्यूम चार्ट्स को, तो मैं उसमें जो भी टेक्निकल इंसाइट्स मिलेंगे मुझे, मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको भी एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव मिले कि चार्ट्स को किस तरह से रेट करना है। राइट, तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर हम लोगों को एक बेरिश एंगल्फ मिला। ओके, सो ये एक बेरिश एंगल था, फॉलो थ्रू आया, और यहाँ पर हम लोगों ने एक पिवट मारा। दिस पिवट वाज बुलिश। ओके, ये पिवट मार के मार्केट का पूरा यहाँ तक आए हैं। दिस इज द डे ऑफ जीएसटी अनाउंसमेंट। राइट, ये जीएसटी अनाउंसमेंट था, काफी बुलिश कैंडल, गैप अप तो हुआ, काफी बुलिश कैंडल था, बट काफी सारा उसने गिव अप भी मार दिया था। और अगले 3 दिनों में वो क्या किया, बाजार ने क्या किया, इट ट्राई टू गो अप। ये बेरिश एंगल्फ का जो एक रेजिस्टेंस जोन था, राइट, यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस खाया, डोजी बनाया, फॉलो थ्रू आया, एंड काफी अच्छा खासा ब्रेकडाउन आया। अब यहाँ पर क्या किया, आफ्टर दिस द मार्केट इज टेकन अ सपोर्ट ही, प्रीवियस पिवट के पास सपोर्ट लिया। तो यहाँ पर हम लोग ये इंसाइट डालेंगे कि
while the market is facing resistance around 25,170, 25,300, ये फ्यूचर्स का चार्ट है, ठीक है. मार्केट हैज आल्सो फाउंड सपोर्ट अराउंड 24,400. ये आपका सपोर्ट लेवल बन गया. ये 25,300 आपका रेजिस्टेंस लेवल बन गया. अभी क्लियर? यहां तक सब समझे कि क्या हुआ मार्केट में? एक मार्केट में जो कैंडलस्टिक की स्टोरी है वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, राइट. अब इसके बाद क्या हुआ है? मार्केट इज अगेन ट्राइंग टू, और निफ्टी इज अगेन ट्राइंग टू रीटेस्ट दिस रेजिस्टेंस एरिया. तो धीरे धीरे करके मार्केट काफी तकलीफ के साथ, मतलब बहुत क्लैरिटी नहीं है. काफी सारा यहाँ पर भी बुलिश कैंडल था, गिव अप मार दिया. यहाँ पर भी बुलिश कैंडल था, गिव अप मार दिया. इवन ये तो ऑल दीज लास्ट 4-5 ट्रेडिंग सेशंस में काफी सारा जो बुलिश मोमेंटम बिल्ड करता है इंट्राडे में, वो मोमेंटम बाय एंड ऑफ द डे गिव अप मार देता है. वो स्टीम बन नहीं पाती है, वो एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट कंसिस्टेंटली रिटेन नहीं कर पा रहा है बाजार. तो ये एक तकलीफ की बात है कि मैं जो एक अपवर्ड मोमेंटम लाने की कोशिश कर रहा है बाजार के पार्टिसिपेंट्स, वो सस्टेन नहीं हो पा रहा है, ठीक है. दैट्स द इनसाइट, दैट्स द बैकग्राउंड. उस बैकग्राउंड में मार्केट इज करेंटली कमिंग क्लोज टू अ प्रीवियसली टेस्टेड रेसिस्टेंस जोन. अब रेसिस्टेंस जोन में दो चीजें हो सकती हैं. लेट मी डिलीट ऑल दिस. ये जो रेसिस्टेंस जोन है, ओके, मैं इसको आरएस बोल देता हूँ. यहाँ पर देयर कैन बी टू थिंग्स. वन, द फर्स्ट रिएक्शन could be prices take resistance and fall. Okay, the second thing would be price breaks out of resistance, right? तो यहाँ पर जो हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस देखा है, अगर सी व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर हमको नहीं मालूम, बट दिस इज अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है. पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जब बाजार इस रेजिस्टेंस जोन में आएगा, इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर ऑल ट्रेडर्स. शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है. यहाँ पर मार्केट एक डायरेक्शन ये ले सकता है, ठीक है. दिस इज कॉल्ड फिक्सिंग रेजिस्टेंस हियर. तो यहाँ पर क्या बनता है? ट्रिपल टॉप, 1 2 3, ट्रिपल टॉप बन जाएगा, विच इज बेरिश. ओके, दिस इज सिनेरियो 1. नाउ सिनेरियो 2, मैं दूसरे कलर में लिखता हूं इसको. सिनेरियो 2 इज वी गेट अ ब्रेकआउट. ओके, ब्रेकआउट आएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? टेक्निकली बोलेंगे डब्ल्यू फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया. What is W formation? Essentially triple top and double bottom, double bottom, triple top, right? So ये आपको क्लियरली दिख रहा है W पैटर्न बनता हुआ. So until and unless as a trader आप रिएक्शन करोगे, आप प्रोएक्टिवली काम नहीं करोगे. अगर मार्केट में यहाँ पे रेजिस्टेंस मारा, सी एज अ ट्रेडर यू शुड बी एग्नोस्टिक कि बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है कि बाजार नीचे की तरफ जा रहा है. As an investor, you are interested कि बाजार ऊपर की तरफ जाए, right? As a trader, you are more keen on what is the reaction of the market for a point of inflection, a point of interest. This is the point of interest. यहाँ पर जब बाजार आएगा, if it makes resistance, we will plan. If scenario 1 bearish plays out, we plan bearish strategies. Okay. Now, what could be the bearish strategies? In cash, you cannot do anything. In futures, you can short. Okay. And in options, you can buy a put, sell call, do a pair put or a call spread. Some basic strategies is what we are discussing. ठीक है, क्योंकि हम लोग बेरिश हैं, कैश में कर नहीं सकते. कैश, ETF या इंडेक्स फंड्स में हम लोग शॉर्ट नहीं कर सकते. तो कैश इज रोल्ड आउट, राइट? ओनली इन फ्यूचर्स
एंड इन ऑप्शंस वी कैन सेट अप सम स्ट्रेटजीज. फ्यूचर्स में शॉर्ट कर सकते हैं फ्यूचर्स को, ठीक है. ऑप्शंस में हम लोग पुट बाय कर सकते हैं, कॉल सेल कर सकते हैं, या पेयर पुट या पेयर कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजीज कर सकते हैं. राइट. सो दीज आर सम ऑफ द सेटअप्स दैट वी कैन कंसिडर अगर मार्केट में यहाँ पे रिएक्शन दी. तो रिएक्शन किस तरह से होगा? बाजार यहाँ पर आया and it follows through on the negative side. Ideally, if this reaction comes along with a proper candlestick pattern, किस तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है? बेरिश में क्या हो सकता है? बेरिश एनगल्फ, ठीक है. शूटिंग स्टार, ठीक है. बेरिश हरामी. So what these do is it reconfirms your conviction that this resistance zone is strong. It is not likely to break so easily. The market can give a negative reaction. Right? If you have a proper candlestick pattern, अपना conviction strong हो जाता है. Right? So what are the things that can convince us that the market is trying to give a particular direction? It could be bear, it could be bullish. Either ways, what are the things that can happen? On the bearish side, you will have candlestick patterns. Okay. If these patterns show, some proper formation, जैसे यहाँ पे डोजी बना, ठीक है, शूटिंग स्टार डोजी, यहाँ पे बेरिश एंगल्फ बना, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स हैं, which tells you कि ये रेजिस्टेंस काम कर रहा है. अब यहाँ पर जब ये रेजिस्टेंस टच करेगा, when it will get tested, that is when we should be interested what sort of reaction the market is giving this particular resistance zone. Basis that reaction, we will be ready with probable strategies. अगर आपका स्ट्रैटेजी है कि आप सिर्फ लॉन्ग ओनली कर रहे हैं, या आप कैश में सिर्फ काम करते हो, या सिर्फ आपको बुलिश स्ट्रैटेजीज में ही काम करना है, तो ये अगर मार्केट ने नेगेटिव रिएक्शन किया, you will do nothing. But if you are a trader who does both long short, you should be ready with both scenarios. Clear? Now this is one scenario. Now second scenario में क्या हो सकता है? Now, if the market breaks through on the upside, right, for a breakout, what are the two things that one should look for? One, strong price action. What do you mean by strong price action? Basically, big, green, full bodied कैंडल है ना, वो दिन का जो कैंडल हो ना, इस तरह का कुछ हो, समथिंग लाइक दिस. सेकेंड, सपोर्टेड बाय, क्या सपोर्ट होना चाहिए? ब्रेकआउट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेकआउट्स? For a breakout to manifest, what are the things that matter? Supported by strong volumes, right? नहीं, रिटेस्ट नहीं होगा इधर प्रकाश भाई. अगर ब्रेकआउट आता है, सिनेरियो नंबर 2 प्ले आउट होता है, ये वाला, ठीक है. इफ दिस सिनेरियो प्लेस आउट, यहाँ पर एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना एंड इट क्लोजेस अबाउट दिस रेजिस्टेंस एरिया, ताकि ये रेजिस्टेंस को खत्म करे, ये दीवार को तोड़ दे, तो वो तोड़ता है दीवार, इट शुड कम विथ टू थिंग्स. एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल जैसा फॉर्मेशन हो, बिग ग्रीन फुल बॉडीड कैंडल, ठीक है, ताकि हमको कन्विक्शन रहे कि भाई दैट बाइंग मोमेंटम, बाइंग प्रेशर इज देयर, बाइंग इंटरेस्ट है इसमें. नंबर 1. सेकंड, जो बाइंग प्रेशर आएगा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ आना चाहिए, मतलब लोगों ने पैसा लगाना चाहिए उसके पीछे, राइट. शैलो प्राइस मूवमेंट नहीं चाहिए हमको, स्ट्रॉन्ग प्राइस मूवमेंट विद अ लॉट ऑफ वॉल्यूम्स अगर आएगा, देन यू विल से कि ये ब्रेकआउट जेन्युइन है, फिर हम नेक्स्ट रेजिस्टेंस या ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ सकते हैं बाय पॉसिबली बाय दिवाली और राइट. तो ये ब्रॉड एक मार्केट एनालिसिस है फॉर निफ्टी, both on the downside as well as on the upside. Any questions here? Okay, let me remove all this and now let us go back to this. ठीक है.
नाउ व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट आई विल लुक फॉर? मैं यहाँ पर एक और चीज दिखाऊंगा। एक प्रायर ट्रेंड था, ट्रेंड लाइन जो रेजिस्टेंस काम कर रहा था, एंड ये जीएसटी का जब अनाउंसमेंट आया, मार्केट ब्रोक थ्रू दैट रेजिस्टेंस जोन, तब हम लोगों ने बोला चलो एक ब्रेकआउट आया है। वो ब्रेकआउट ऊपर के नजदीकी रेजिस्टेंस खाया जोन को, एंड इट केम डाउन। इट केम डाउन, रीटेस्टेड दिस जोन। यहां पर आप लोग सब देख रहे हैं क्या हुआ है? इट रीटेस्टेड दिस जोन, ओके, एंड इज नाउ ट्राइंग टू मूव अप। सो इन निफ्टी हम लोग थोड़ा सा ये विश्वास कर सकते हैं कि यार निफ्टी जो है थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा रहा है एज कंपेयर टू द अदर मेजर इंडेक्स विच इज बैंक निफ्टी, एंड आई विल कम टू दैट क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। निफ्टी ने क्या किया है, एक ब्रेकआउट भी दिया प्रीवियस ट्रेंड लाइन को, एंड थोड़ा बहुत रेसिस्टेंस खा के नीचे आया है, रिटेस्ट किया उस ट्रेंड लाइन को, एंड इट इज नाउ ट्राइंग टू मूव अप। तो इवेंचुअली मेरे हिसाब से निफ्टी शुड गो अप, ब्रेक दिस जोन एंड हेड अप। बट वो कब होगा, कैसे होगा, एक और रिटेस्ट नीचे आएगा नहीं आएगा, मुझे वो नहीं मालूम। बट जो प्राइस एनालिसिस बता रहा है शायद वो ऊपर की तरफ जाना चाहता है। दिस इज वन ट्रेंड लाइन। लुक एट द सेकंड ट्रेंड लाइन। दूसरा अगर मैं ट्रेंड लाइन उसी पॉइंट से जोड़ूं जहां पे रेजिस्टेंस आया है, इट हैज नाउ गिवन अ ब्रेकआउट टुडे, राइट नाउ। कोई भी अगर ब्रेकआउट देते हैं और एकदम सामने ही रेजिस्टेंस है, तो वो ब्रेकआउट में थोड़ा तकलीफ आता है क्योंकि वो कंप्रेशन जोन में है। वो कंप्रेशन जोन को जब तक क्लियर नहीं करेगा तब तक मार्केट में फ्री फ्लो मूवमेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो व्हाइल देयर इज अ ब्रेकआउट, ठीक है, व्हाइल देयर इज सम पॉजिटिविटी इन द मार्केट, इट इज नॉट गेटिंग सस्टेन्ड। वो लंबे, उसकी आयु लंबी नहीं है, इट इज नॉट एबल टू लिव अप टू इट्स पोटेंशियल। ऑलराइट, तो आज भी देखें कैंडल्स में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग विद द प्राइस एक्शन। व्हाइल द मार्केट इज गिविंग अ बुलिश स्टार्ट अच्छा है बट सस्टेन नहीं हो पाता। हमेशा हम लोग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से सेल ऑफ कर जाते हैं सेकेंड। तो these breakouts, बुलिश मोमेंटम स्ट्रेटजीज जो भी करना है आप तब तक नहीं करेंगे जब तक मार्केट में क्लियर कट डायरेक्शन नहीं आए, राइट। सो द सेकंड ऑब्जर्वेशन वुड बी कि मार्केट इज ट्रेडिंग विद इन दिस जोन। एक नीचे का लेवल था जो सपोर्ट बना हुआ है, जहां से मार्केट ने सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। दूसरा जो है एक ये नियर बाय रेजिस्टेंस है जहां से मार्केट ने एक प्रॉपर डाउनफॉल दिखाया, एंड ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर पढ़ने की कोशिश कर रहा है इन दिस एरिया ऑफ कंजेशन। अंटिल एंड अनलेस इट ब्रेक्स आउट हम कुछ बोल नहीं सकते। दूसरा क्या हो सकता है भैया, यहाँ पर मार्केट ने एक वापस रेजिस्टेंस खाया एंड इट फॉलोज दिस रेजिस्टेंस लाइन। ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इसको फॉलो करे, एंड कहीं ना कहीं दिस कुड बी अ पॉसिबल scenario that plays out. What could be the possible scenario? Market takes a resistance, comes somewhere in this trend line, and then eventually breaks. Can this be possible? Right? Looking at what is happening here, right? Looking at what is happening. History, as a technical analyst, you will look at the history and then try and say or try and assess what could happen in the future. So looking at this pattern, there is a possibility कि मार्केट इस तरह से भी रिएक्ट करे। तो ये जो ट्रेंड लाइन बनाया है मैंने, ये मेरा इमेजिनरी ट्रेंड लाइन है, आई कुड बी रॉन्ग बट है ना, आई एम ट्राइंग टू फॉलो व्हाट द मार्केट इज ट्राइंग टू डू। तो ये ट्रेंड लाइन जो मैंने बनाया है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ पर वापस आए, रिटेस्ट करे एंड फिर ऊपर जाए। क्या होगा, व्हाट इज द पैटर्न वी आर ट्राइंग टू बिल्ड हियर? एक इस तरह का कंजेशन पैटर्न बन रहा है, ठीक है। इवेंचुअली मार्केट हैज टू ब्रेक आउट either on the upside or on the downside, but looking at a low, slightly higher low formation, there is a possibility कि मार्केट अगर यहाँ पर वापस हायर लो बनाता है तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। दिस इज अ टेक्निकल एनालिस्ट पर्सपेक्टिव। इसको कंबाइन करें आप या पॉसिबल ना प्रकाश, इसको आप कंबाइन करेंगे विद फंडामेंटल न्यूज फ्लो जो हो रहा है। क्या क्या फंडामेंटल न्यूज फ्लो हो रहा है अराउंड अस? व्हाट आर द फंडामेंटल न्यूज फ्लोज? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टैरिफ। टैरिफ की स्पेलिंग क्या है? आई डोंट नो।
सेकंड क्या हो सकता है? जीएसटी रिफॉर्म्स, राइट? इसका डेट क्या है? बी अवेयर, 22 September onwards. Why? Because this is start of Navratra. That is when lot of Hindus will start buying their things. चाहे वो छोटी चीजें हो, चाहे वो बड़ी गाड़ी, जैसे व्हीकल्स हो, वाइट गुड्स हो, या एनी मेजर कंजम्पशन. रोज का आटा, चावल, दाल, सब्जी वो तो रोज खरीदते ही हैं, बट एनी मेजर consumer या consumption driven items are all not going to be purchased in this श्राद्ध मास. ये 15 दिन जो है जहाँ पे श्राद्धों को हम लोग मनाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे जनरली परचेज नहीं करते, राइट? तो 22 सितंबर को ही जीएसटी इम्प्लीकेशन होगा. हाँ सर, हम लोगों को एक्सपेक्टेशन है कि देखो ये क्वार्टर तो चला गया, फिर बाद में अक्टूबर टू दिसंबर, which is the third quarter, should be good for domestic facing companies, especially in the consumption space. देखो पहले से क्या होता था, सेक्टर होता है एफएमसीजी सेक्टर, अब जनरली कंजम्पशन स्पेस में मोर थीम्स पे काम करते हैं इंडिया. तो कंजम्पशन बास्केट जो है वो अच्छा करना चाहिए, राइट? बिकॉज जीएसटी रिफॉर्म से कई सारी चीजें सस्ती होंगी, टैरिफ में शायद कुछ डील बन जाए, राइट? शायद कोई डील आ जाए. सो दिस इज अ वाइल्ड कार्ड, मतलब इसमें क्या होगा नहीं मालूम. जीएसटी रिफॉर्म्स आया है. थर्ड क्या है? गुड मॉनसून. दिस इज करेक्ट, गुड मॉनसून है. हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है कि जो बारिश हुई है अच्छी हुई है, बट काफी लेट हुई है. तो एक सम पीपल आल्सो आर ऑफ ओपिनियन दैट खड़ी फसलें खराब हो रही हैं, जिसके कारण एमएफआई स्पेस जहाँ पे लोन लेते हैं, वहां पे कुछ रूरल बेल्ट में तकलीफ हो सकती है, बिकॉज फ्लडिंग के कारण, खड़ी फसलों पे बारिश करने के कारण फसलें खराब हो रही हैं. तो द फार्मर्स एंड द अग्रेरियन इकोनॉमी माइट सफर. एक ये व्यू पॉइंट भी बन रहा है. सो सी, मार्केट में एकदम क्लैरिटी नहीं रहेगी कि दिस इज ब्लैक, दिस इज व्हाइट, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बुलिश है, ये बेरिश है. ऐसा कभी नहीं होने वाला. मार्केट में हमेशा अपोजिंग फोर्सेस रहने वाले हैं, ठीक है? कुछ पॉजिटिव फोर्सेस भी होंगे, कुछ नेगेटिव फोर्सेस भी होंगे. यू हैव टू थिंक कि नेट ऑन ऑन नेट बैलेंस ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है आपको कि नेगेटिव लग रहा है. तो आप प्राइस एक्शन देखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल इंसाइट्स लेंगे, उसके बेसिस पे आप एक व्यू फॉर्म करके ट्रेड करें. ये सब जितना मैं बता रहा हूँ, क्या ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए लागू होता है? ऑफ कोर्स नॉट. इंट्राडे ट्रेड में क्या होता है, 5-10 मिनट का या ज्यादा से ज्यादा 1-2 घंटे का ट्रेड होता है. उसमें आप टैरिफ में क्या होगा, जीएसटी रिफॉर्म्स का क्या इम्पैक्ट आएगा, ये सबसे कुछ लेना नहीं है. आप प्योर प्राइस एक्शन पे ट्रेड करें, ठीक है? अब मैं थोड़ा स्विंग टाइप का ट्रेडर, तो मेरे को अच्छा लगता है कि मैं ये दोनों चीज टेक्नो फंडा कंबाइन करके व्यू बनाऊं, इसमें शांति से काम होता है, एंड कम ब्रोकरेज में, कम खर्चे में, कम इन्वॉल्वमेंट में, अच्छे से शांति से पैसा बंदी की उम्मीद होती है, राइट? सो प्योर ट्रेडर जैसा बात नहीं है, बट मोर फ्रॉम अ स्विंग ट्रेडर पर्सपेक्टिव, यानी इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव, ठीक है? दीज आर सम ऑफ द फंडामेंटल फैक्टर्स दैट वन शुड बी लुकिंग फॉर. कुछ लोगों ने बोला कि आरएसआई डालें, चलो आरएसआई डाल के देखते हैं. I was coming to some of the technical indicators. ये तो प्राइस एक्शन था. RSI 58 चल रहा है, काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है. RSI ने भी हायर हाई बनाया है, मार्केट भी एक इक्वल हाई की तरफ चल रहा है. सो इट इज नॉट डाइवर्जेंस, देयर इज नो डाइवर्जेंस ऑन RSI in terms of the basic or the clean price action reading, right? Now can we move on to the next index? निफ्टी में अगर आपका व्यू क्लियर हो गया हो. Okay, now let us move on to the next index, which is, let's say, banking.
चलिए बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है. Now Nifty and Bank Nifty are unique in the sense that this was the area Nifty took support. Bank Nifty broke that support. Hence, therefore, Bank Nifty is weaker of the two major indices that we track generally in the market. Simple. ये वाला जो level था, this is in the first week of August. यहाँ पर तो ये वाला लेवल निफ्टी ने डिफेंड किया, यहीं से निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है. ठीक. बैंक निफ्टी ऑन द अदर हैंड हैज ब्रोकन दैट लेवल एंड नीचे की तरफ फॉलो थ्रू दिया. तो बैंक निफ्टी और निफ्टी का जो चार्ट का मूवमेंट है, जो प्राइस एनालिसिस है, आर डिफरेंट, दे आर डाइवर्जिंग. एंड क्योंकि बैंक निफ्टी बीइंग अ मेजर कंपोनेंट ऑफ निफ्टी, अगर उसका व्यू डाइवर्जेंस है तो फिर मोमेंटम कहां से आएगा. गेट व्हाट आई एम सेइंग. If Nifty is trying to move up, Bank Nifty is trying to move down or sideways, right? Nifty cannot gain that momentum. वो speed पकड़ेगा ही नहीं. Simple. This is a simple inference. Why? Because this is the level. ये अगस्त का फर्स्ट वीक ऑफ लेवल है, फर्स्ट टू सेकेंड वीक, अगस्त 7-8 तारीख के आसपास का जो मूवमेंट आया था, यहाँ पे पिवट करके निफ्टी ऊपर गया था. एंड ये जीएसटी वाला कैंडल है. Say GST candle. So you can very clearly see GST के बाद Nifty moved up a little, took resistance and then came down, took support and then is trying to. ये Nifty का movement है. Okay? ये Nifty का movement था. बैंक निफ्टी ने क्या किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया, जीएसटी के दिन जो टॉप बनाया था उसके काफी नीचे. निफ्टी ऑन द अदर हैंड इज क्लोज बाय हियर. ये आपका निफ्टी है, राइट. इट इज क्लोजर टू जीएसटी लेवल. लेवल इन द सेंस जीएसटी पे जो लेवल दिखाया था मार्केट ने उसके आसपास आया है. बैंक निफ्टी इज फार ऑफ फ्रॉम जीएसटी लेवल, राइट. सो रिलेटिवली स्पीकिंग बैंक निफ्टी is weaker of the two indices. That's inference number one. Second, until and unless bank nifty starts showing some strength, ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो जीएसटी के लेवल को तोड़ के जावे या एनीथिंग, बट इट नीड्स टू स्टार्ट शोइंग पॉजिटिव इंटेंट. जब तक वो बैंक निफ्टी में नहीं दिखेगा, निफ्टी में अच्छा खासा मोमेंटम बिल्डअप होना मुश्किल है. सिंपली बिकॉज बैंक निफ्टी इज अ मेजर कंपोनेंट, फाइनेंशियल्स आर अ मेजर कंपोनेंट ऑफ निफ्टी इंडेक्स. निफ्टी इज नथिंग बट अ बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज. उसमें अगर मेजॉरिटी जो है बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स है, बैंक निफ्टी वीक है तो निफ्टी में मोमेंटम नहीं आ सकती. ये बहुत कॉमन सेंसिकल इन्फरेंस है, इसमें कोई टेक्निकल एनालिसिस होने की जरूरत नहीं है. क्लियर एवरीबॉडी? Next, what has happened in Bank Nifty? Let's mark some of the levels on Bank Nifty as we did on Nifty. So Bank Nifty ने क्या किया था? Let me see if I can get those. Yes, this was the level जहां पर Bank Nifty took support, right? एक support बनाया. Last time we discussed that ये rounding top बना रहा है. If it breaks, it will come down till here. We continue to hold that view because Bank Nifty has broken this level. Bank Nifty happens to be weaker of the two. दूसरा क्या है? बैंक निफ्टी ने एक have I not marked it? Okay, let me mark it.
Bank Nifty has multiple levels of resistances. This is the resistance from where Nifty has taken a fall. करेक्ट, ये जीएसटी वाला इधर आया, निफ्टी ने यहाँ से फॉल लिया. मैं ये कोई रेजिस्टेंस नहीं बोलूंगा, एक्चुअल रेजिस्टेंस यहाँ पर बना था. ये फॉर्मेट थोड़ा मडर्ड है, मतलब इतना क्लियरिटी नहीं है बैंक निफ्टी में. यहाँ पर आया, रेजिस्टेंस लिया एंड हैज फॉल. अब इन बैंक निफ्टी आई सी टू लेवल्स ऑफ रेजिस्टेंस. एक ये पूरा लेवल है, राइट, दैट्स द मेजर रेजिस्टेंस लेवल एरिया. एंड द सेकंड वन इज यहाँ पे ड्रॉप बेस ड्रॉप ड्रॉप, काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के साथ 55,000 के लेवल पे. दिस आर फ्यूचर्स चार्ट्स. तो 55,000 लेवल पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट दिख रहा है एंड इमीडिएटली ऑन टॉप ऑफ इट एक और रेजिस्टेंस पॉइंट दिख रहा है. सो माय फर्स्ट inference here is Bank Nifty is likely to face a lot of resistance in this area. Right? 55,000 से लेके 56,000, रफली अबाउट ये 1,000 पॉइंट्स के बीच में बैंक निफ्टी को क्लैरिटी नहीं है. सो एज अ टेक्निकल एनालिस्ट व्हाट डू यू से, द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस. तो यहाँ पर रेजिस्टेंस काफी है, तो इतना इजीली बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ मूवमेंट करना मुश्किल लग रहा है. गिवन दैट लॉजिक, निफ्टी का भी बुलिश व्यू थोड़ा सा वीक पड़ जाता है. Are we clear? Notwithstanding मार्केट में आज क्या हो रहा है, which is nice and positive, until and unless it breaks through these levels, from a positional perspective, थोड़ा difficult लग रहा है. Okay? Are we clear till here? Okay, let me see what else. What are the questions before I continue? Right. So Bank Nifty is facing some resistance. Nifty happens to be the stronger of the two. Until and unless Bank Nifty, gives a clear-cut breakout, it will be difficult for us to, get a grip of where the market is trading. यहाँ पर क्या trades कर सकते हैं हम? What are the trades here? In Bank Nifty, which is the weaker of the two, given that there are resistances, on confirmation we can go short, right? क्योंकि अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो ऊपर भी एक और लेवल है. Until and unless ये दोनों लेवल्स ब्रेक करता है, ये रिफ्लेक्शन, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट ब्रेक करता है बैंक निफ्टी, अनदर 12 to 1400 पॉइंट्स अवे, क्लियर कट पोजिशनल या स्विंग डायरेक्शन नहीं मिलेगा. शॉर्ट टर्म में आप क्या कर सकते हैं? Let's look at the hourly chart. Why I look at the 75 minute and why do I call it the hourly chart is because, as I've explained last time, इंडियन इक्विटी मार्केट में 60 मिनट्स के फुल कैंडल्स नहीं बनते हैं. लास्ट का जो कैंडल बनता है वो 315 से लेके 330 का बनता है. 75 मिनट्स का अगर हम लोग करेक्ट कैंडल टाइम फ्रेम करेंगे तो वी गेट इक्वल 5 कैंडल्स. जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ. 9:15 का लेते हैं हम लोग कैंडल. ये जैसे ये वाला कैंडल, ये वाला, ये जो रेड कैंडल है 9:15 है, तो इट एंड्स एट 10:30. 10:30 पे कैंडल चालू हुआ, it goes to 11:45, which is 75 minutes. 11:45 to 1 o'clock, 1300 hours. एंड यहाँ से फिर 2:15 पे लास्ट कैंडल चालू होता है, which ends at 3:30. ये 5 कैंडल्स इज बेसिकली यस्टरडेज प्राइस मूवमेंट. ये रेड कैंडल से लेके 1 2 3 4 5, तो ये फुल कैंडल्स होते हैं. तो कैंडल में जो है 75 मिनट्स का प्राइस एक्शन, फुल 75 मिनट्स का वॉल्यूम एनालिसिस कर सकते हैं. इफ यू डू इट फॉर 60 मिनट्स, द लास्ट कैंडल starts at 3:15 and ends at 3:30. So it's not actually उसमें 45 मिनट्स कम डेटा होता है, so you will not get a proper analysis. Now अगर मैं यहाँ पर देखूं on the 75 minutes या let's call it the hourly time frame, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग एक चैनल में मूव कर रहे हैं. What is that channel? Is this channel? Yes or no, friends?
we are moving in a particular channel. ऊपर में ये जो channel है upward sloping channel है. So on the smaller time frame there is some amount of hopeful or some amount of bullishness building into the market. Now market is trying to move into this channel. There could be a reason that there could be a possibility the market eventually follows this channel, right? Follows this channel and moves up. तो धीरे धीरे करके वो ऊपर मूव हो सकता है. चैनल ब्रेकआउट करेगा यहाँ पर. इफ देयर इज अ ब्रेकआउट तो यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस 2. स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आना इन माय असेसमेंट looks a little tough. Okay, now this is basic price action. Let us see what is volume telling us. Are these price actions supported with strong volumes? Let us try and see that. So volumes में if you look at the bars, volume bars, उतनी clarity नहीं आ रही. ठीक है, मैं क्या करता हूँ कभी कभी what I try to do is I hide the actual volume bars and simply look at the movement of the averages. Volume का जो average है, moving average, उसको मैं देखता हूँ. ये blue line. Okay. Now when I look at the volume moving average, इसमें कुछ भी clarity नहीं है. The slope is sideways. Right? See, as a technical analyst, what should we look for? We should look for trends in both volumes and price. Right? If they are in conjunction, price is moving up, volume is moving up, bullish. If price is moving down, along with upward movement of volume, the downward pressure is maintained. Right? If these two signals cross, or if these two signals give you opposite direction, ki matlab price is trying to move up, volume is not supporting, so there is momentum, there is suspicion ki wo fail ho jayega. And when you are closer to a resistance point, that suspicion kind of becomes stronger. Right? Now, if the price is trying to move up, like for example, आज market is up by 66 basis points या 0.6%, 0.5% से ऊपर market ऊपर चल रहा है, करीब 350-400 पॉइंट से ऊपर market चलने की कोशिश कर रहा है. When I am speaking of Bank Nifty and the futures. अगर आप वॉल्यूम देखिए तो वॉल्यूम में एक साइडवेज सेट ऑफ मूवमेंट है. पिछले सितंबर के महीने में वॉल्यूम जो है एक साइडवेज मूवमेंट है, एक कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है वॉल्यूम. अगर वॉल्यूम सपोर्टिव नहीं है तो ये जो ब्रेकआउट आ रहा है मे और मे नॉट सस्टेन. All right, now let's look at Nifty. Nifty का भी जो प्राइस एक्शन आ रहा है, what do you feel about the volume? Is it along with strong volumes or are the volumes on the lower side? See, if we look at the volume movement is very, very muted. It is not showing an upward trajectory. And because the market is trying to, recapture a supply zone, a resistance zone, shallow volumes, this price movement can be labeled as suspect. Are we clear? ये जो प्राइस मूवमेंट है ये सस्पेक्शन के साथ है. वॉल्यूम जो है वो ऑन द लोअर ट्रेजेक्टरी है. ठीक है, अगर आप वो आवरली चार्ट देखें, क्या देख रहा है यहाँ पर आप? यहाँ पर थोड़ा रेजिस्टेंस खाता हुआ दिख रहा है. मार्केट नीड्स टू शो अ क्लीन इंटेंट. आर वी क्लियर टिल हियर? एवरीबॉडी, यस, नो? So this is the broad analysis of Nifty and Bank Nifty. While the markets, the intent is positive, the intent is bullish. Both are facing both are closer to resistance points, and until and unless that resistance is taken away convincingly, with how do you get convinced? Is with strong volumes. Planning any trades or any upward movement trades, थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा डर लगेगा. ठीक है, क्या आप बेरिश ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं? अगर रिएक्शन आता है फ्रॉम दोस रेस्पेक्टिव सप्लाई जोन्स दैट वी हैव डिस्कस्ड, इफ देयर इज क्लियर कट रेजिस्टेंस, इफ देयर इज अ क्लियर कट प्रॉफिट बुकिंग दैट हैपेंस, देन वी कैन कंसीडर
doing certain very strategies. Okay. Now, I have completed my broad analysis of the two indexes. Right now, I am ready to take certain questions from the audience. Specifically, अगर आपको कोई index के बारे में बात करना है तो I will be more than happy. Stock specific बात भी आप पूछ सकते हैं. मैं broadly chart देख के बता सकता हूँ without giving you levels because that will be construed as a recommendation. So प्रकाश जी पूछ रहे हैं IT सेक्टर पर. IT सेक्टर में दो इंडेक्स प्रकाश जी. ठीक है, एक टेक्निक आपको था IT सेक्टर, CNX IT. All right, this is the IT sector index. Now, IT sector index is seen taking support around 34,000 levels and is now trying to give you the same kind of a movement that Nifty is giving. एक W shape का मूवमेंट दिखाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर कोई भी ऐसा रेजिस्टेंस नहीं. अगर ये 36,400 टेक आउट करता है, then you can say that it can at least try and come and cover this gap. तो gap भी शायद IT में हो सकता है. Okay. For that, it has to break through this resistance. So IT on the face of it looks bullish given the price structure. क्योंकि यहाँ पर क्या है, IT ने क्या किया, यहाँ पे एक gap level बनाया, एक pro gap बनाया. What is a pro gap? Again, this is a candlestick pattern. The trend is down, and the next candle is so strong and in the opposite direction that it has created a substantial gap in price. Okay, that is called a pro gap. This is a novice gap. Yeah, along with the trend, it is a continuation gap. This is a opposite gap. Opposite gap at inflection point. यहाँ पे double bottom बनाया है ना, तो इसको pro gap होते हैं. Pro gaps generally कौन create करता है? Some strong institutional players create करते हैं with lot of money power. So pro gaps, as the name suggests, are stronger and reliable signals of point of reversal in the market. So these are not easily filled. So IT sector looks decent for the time being, right? However, it is close to a resistance point. It needs to convincingly break this. Then we are looking at this path of resistance nahi hai yahan par, so it can come and at least do this gap fill till here. This is IT. Next, any other sector that you want to see? MSIT देख लेते हैं, mid and small IT, which is another sectoral index. It has a similar sort of a pattern. यहाँ पर एक सपोर्ट था, यहीं पे डबल बॉटम बनाया एंड प्रो गैप बनाते हुए it is, it has a similar pattern. So and this looks rather stronger of the two because यहाँ पे W formation is much more clearer and the movement is much more clearer in terms of the up move. तो यहाँ पर एक W पैटर्न का ब्रेकआउट बनता हुआ दिख रहा है in mid small IT and telecom index. Okay, so these two indices are showing smart recoveries and smart reversal pattern formations on daily time frame, right? So these two sectors can give some bit of, can have momentum क्योंकि यहाँ का जो price action है, it looks positive. All right, any other index that you guys want me to check before I move on to a couple of stocks and then we close the day? All right, let me check. There were a couple of questions on the stocks. Let me check those two stocks. One is PSC on the technical front. Let's look at the higher time frame. On the higher time frame, the charts are fairly strong. यहाँ पर जो एक previous pivot point था, right? Market is kind of looking to take support around these levels, around the 2000 levels. So this becomes a support area for BSC.
In fact, this is how I would mark it. More than a point, it is actually a zone like this, somewhat like this. Okay, कुछ इस तरह का एक जोन बना हुआ है ऑन BSE. So roughly about 2100 के बीच में एक सपोर्ट एरिया बना हुआ है जहां पर मार्केट एक सपोर्ट लिया है. However, the current week, ये जो हफ्ता है इसमें मार्केट प्राइस एक्शन, BSE का प्राइस एक्शन अभी भी वीक है. So again, no trading recommendations, no investment recommendations here, but purely on the basis of price action reading. Until and unless this support holds, right? You can look at, you can still be positive on this stock, okay? And this could be a phase of accumulation for this stock until and unless till such time that support level holds. If the support level breaks, then the path of least resistance happens to be on the downside, and the next support for BSE looks to be around this pivot point, right? Which also shows a small pro gap as well, correct? तो ये जो गैप बनाया है यहाँ पर, तो मे बी यहाँ तक आ सकता है if this support breaks. Whether it will break or not, future ही बता सकता है. Let's see if I put a couple of other indicators, like a dynamic indicator, like a super trend. Is it confluencing? See now, this is what is making it interesting. Can you all see this super trend? See, as a technical analyst, जब आपको confluences दिखते हैं, confluences मतलब जब आपको multiple indicators दिखते हैं in a particular area, तो आप क्या बोलोगे कि हाँ यहाँ पर जो है एक अच्छा खासा सपोर्ट बनता दिख रहा है. So now super trend on the weekly time frame also is confluencing in this support area for us on BSE, right? Around 2000 levels के आसपास. तो in that sense, ये जो सपोर्ट है ना, इसको थोड़ा और मतलब अगर सिर्फ जोन था उसके साथ सुपर ट्रेंड भी वहां पे कॉन्फ्लुएंस कर रहा है, तो मतलब क्या है, सुपर ट्रेंड इज अ डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंडिकेटर, करेक्ट? वी ऑल नो दैट. क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम पे यहाँ पर बैठा हुआ है, तो it could be construed as a accumulation phase for this underlying until and unless this level breaks. So we are technical analysts, we follow price, we don't predict the price. तो हम बोल रहे हैं भैया प्राइस यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश दिख रहा है, राइट? तो वहां से सपोर्ट लेके पिवट बनाया है. एंड जब तक ये एरिया, जब तक ये जोन नहीं टूटता है, फ्रॉम अ पोजिशनल पर्सपेक्टिव हम लोअर लेवल्स पे अक्यूमुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं. बट अगर ये जोन टूटता है, अगर ये लेवल टूटता है, तो मुझे ऑन द प्राइस चार्ट 1400 और 1200 के बीच का जो लेवल है, जो प्रीवियस पिवट पॉइंट है, उसके पहले कोई भी सपोर्ट दिख नहीं रहा. Are we clear with this analysis? Simple technical analysis. Again, no price recommendations, no entry, exit or stop loss given in this chart. Next, कौन सा था? RBN. I'm looking at the weekly chart because nobody should construe it as a trading recommendations or anything. आजकल क्या है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है from BSE and from SEBI कि आप analysis को भी थोड़ा difficult हो जाता है. So we have to err on the side of caution. Now अगर आप BSE RBNL देखें, RBNL's chart is not all that clean. Okay, while it has taken support around 300 levels, but previously ऐसा कोई भी आसपास कुछ भी ऐसा क्लैरिटी नहीं है मेरे को चार्ट पे. ठीक है, क्या ये जोन टूट के नीचे और जा सकता है? क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ अगेन एज आई सेड देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज ऑन दिस चार्ट. इट्स नॉट क्लियर. कैन आई से दैट ये एक जोन था? कैसे बोलूं मैं ये जोन था? नहीं बोल सकता ना, ये सारा नॉइज में एक साथ नहीं कवर कर सकता. क्या मैं बोलूं कि यहाँ पर है जोन, राइट? तो भी सही नहीं होगा. Maybe we can say this is one way of reading it. भैया ये जो एक जोन था, डबल बॉटम बनाया है, बॉटम 1 and बॉटम 2,
ठीक है, and which was at the previous breakout level, क्योंकि ये तो clearly breakout level था ये वाला in May 2024. वहां से अच्छा खासा movement भी आया, retest हुआ है, it tried to move up but then it has come down. So market on RBNL has actually created a low on the chart, higher on the chart and an equal. तो जब तक ये जोन नहीं टूटता है, hopeful. But RBNL as compared to BSE के charts, RBNL looks weaker because BSE looks better in terms of the structure of the chart and supporting technical indicators also lying in that area, right? This is my view on, this is my assessment of the technical assessment of RBNL. Somebody wants to see it on daily. जैसे मैंने बोला डेली वगैरह पे मैं जाता हूँ तो थोड़ा और शॉर्ट टर्म नेचर बन जाता है, थोड़ा ट्रेडिंग का पर्सपेक्टिव रिकमेंडेशन होता है, इसके लिए मैं डेली पे नहीं जाता। ऑलराइट, नेक्स्ट ये हो गया MCX का गोल्ड। So disclaimer, I am invested in MCX gold, and this is the level that I had taken up। ये वाला लेवल था, आप देख रहे हो, क्योंकि गोल्ड में ये लेवल जो था ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई लेवल था 1,02,250 के आसपास, एंड आई हैड पुट एन अलर्ट, एंड जब ये ब्रेकआउट आया यहाँ पर आई टुक सम पोजीशंस एंड आई एम ट्रेलिंग दिस पोजीशंस। सो क्लीन डिस्क्लेमर दैट I have vested interest in gold, I am bullish on gold, I have positions in gold, I've taken the positions at that entry level. Right now the market is trading at a fairly strong area, and until and unless we see any reversal patterns on gold, I don't see it stopping. Can we take a fresh entry at the current level? The answer is no. Fresh level पे कोई भी entry लेना मुश्किल है, क्योंकि technically speaking gold is now overbought. आप Bollinger Bands देखो, it is working the upper band. आप RSI देखो, it is overrated at around 81 on the daily time frame. On the weekly time frame आप देखो, अगर तो what I see that you can make a good assessment, weekly time frame divergence of RSI as compared to the price action. So what does this tell you? Does this tell you कि gold weak है या गोल्ड काफी गिरेगा? नहीं। ऑल इट टेल्स यू इज गोल्ड में काफी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, जब वो मोमेंटम क्रॉस होगा गोल्ड थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में जाएगा, व्हिच विल अलाउ आरएसआई आल्सो टू कैच अप एंड कूल। दोनों जब बराबर हो जाएंगे, डाइवर्जेंस खत्म हो जाएगा, देन अगेन इट शुड रिज्यूम द प्रीवियस ट्रैजेक्टरी फॉर ऑल ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग। इसमें ही दिस इज व्हाट आई फील गोल्ड कैन डू going forward. Okay, now next, what is the next question? Last one is Dixon, and then we will close the day. Now Dixon, if you guys can notice what has happened in Dixon, can anybody tell me what has happened in Dixon? Let me remove this. This is the daily time frame only on Dixon. Let me see on weekly पे भी दिखता है ये चीज। वीकली पे इतना क्लियर नहीं है, पर डेली पे एक बहुत अच्छा पैटर्न बना। Can somebody tell me what is the pattern on Dixon? I'll broadly give you the pattern. It's somewhat like this. Can you all see the pattern that I have drawn? What is this pattern? This is an inverted, it looks like an inverted shoulders, and this level happens to be the, you know, and this level around 17,000, 16,000, yes, around 70,000 happened to be the previous breakout level. From there, Dixon has actually given a breakout. But if you notice, the volume, because the overall context of the market is weak,
see the breakout candle had good volume. However, the follow through is not that strong. So volumes बहुत strong नहीं है Dixon में. That is why, in spite of a nice and smart breakout, Dixon is struggling to scale new heights. देखो, you are actually going against the wind ना. इसमें कोई बहुत strong momentum या बहुत strong news flow नहीं है. तभी क्या हो रहा है? Purely on the price action, purely on overall assessment of the stock company, people are taking positions here. But because of lack of strong news flow, any strong market support, the breakout is struggling. Momentum नहीं है बाजार में, broader context में momentum नहीं है, तो until and unless कोई stocks में specific momentum हो, या तो इसने acquisition किया हो, या तो बहुत बड़ा order हो, या तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मेजर पॉजिटिव पॉलिसी डेवलपमेंट आया हो, या तो कोई टेक ओवर आया हो, या तो फंड एनी मेजर प्राइस मूविंग डेवलपमेंट अगर नहीं आया है, then that kind of breakout will struggle. However, it looks positive given the price action. All right, friends. I hope आज का सेशन सबको अच्छा लगा. हम लोग यहाँ पर खत्म करते हैं सेशन को, एंड होपफुली वी विल मीट नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीक, एंड वापस हम लोग टेक्निकल एनालिसिस को कंटिन्यू करेंगे with some other insights and data points. But if you have any questions, or if you want this kind of sessions to be held more often at a particular time that you wish, please write into your customer service, asking them to giving your inputs. We will take the suggestions of the investors, of the traders, and the viewers, and accordingly come up with curated content for all of you, which will help you in your general assessment of the market, and not really come and give you trades and all. इससे कुछ होना नहीं है. Nobody is going to really benefit from that. All right. So I wish you all the very best in your trading journey, and I'll see you next time very soon. Till then, take care. Bye bye.